Hello guys, what's up? So we are getting started today, और आज है 14th of April. Let me just turn on my camera first. Yo, what's up? How you doing? How you doing, fam? कैसा था पिछला हफ्ता, कैसा रहा उसके पहले का हफ्ता? Drop a comment below and let me know कैसा रहा तुम लोगों का trades. How was it? Anyways, I'm checking कि मेरा वॉइस आ रहा हो, अच्छा आ रहा हो. Yo, the voice is on top. It's clear and crisp. तो मज़ा आएगा ना भाई. तो इस वीक जो हमारा वीक ओपन हुआ है, लेट मी जस्ट गो बिफोर, लेट मी शो यू. ये वी हैव ऑन वेडनेसडे हमारे पास एक फेडरल पावल जो आके भाषण देने वाला है. उससे पहले हमारा रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स के कुछ नंबर्स आएंगे, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएगा जो कि थर्सडे को है. सो देयर इज़ वन न्यूज़ विच इज़ लाइक वॉलर आके बात करेंगे. वॉलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर इन फेड, इवन दो दिस इज़ अ ऑरेंज फोल्डर न्यूज़, बट जस्ट कीप इन चेक्स कि this is also important when it comes to trading, especially Waller. And अगर तुमको जानना है कि ये मेरे को कैसे पता, just follow Yusuf on X. So if you follow me on X, you can drop a message there and I will give you Yusuf's account. It's very private and he only accepts very few people there. So let's get started and get back to the charts and what we have seen so far here in today's price action. कि हमारा हफ्ता was like very volatile. This is the hourly chart of Nasdaq, and since we have been like अगर हम 60 डेज़ की साइकिल पे बात करें तो लास्ट 60 डेज़ से हम तो नीचे ट्रेंड कर रहे हैं, बट उससे पहले हमारा था एक कंसोलिडेशन. उसके बाद हमारे पास एक रेंज मिला, लाइक रेंज के बाहर प्राइस खुला और इट ट्रैवल्ड हमारा सेल साइड लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव पे, जो कि कंटिन्यूस चार्ट पे मैं दिखा चुका हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम जस्ट फोकसिंग राइट नाउ ऑन दिस चार्ट हियर. ये हमारा डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है विच इज़ अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. जस्ट फोकस राइट हियर एंड इसको मैं मार्क कर लेता हूँ. एंड मैं देख रहा था कि इसके नीचे कैसे बॉडीज़ क्लोज होती हैं, एंड इट्स प्रिटी बुलिश टू सी दैट हैपन हियर. और आवरली में भी मैं कुछ बुलिश फ्राइडे को देख रहा था होते हुए. तो ये वाला इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था जो कि थोड़े से वाइट शेड में तुम्हें दिख रहा होगा, एंड वहाँ से प्राइस बार होल्ड किया, एंड दिस वाज द एरिया जहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी हंट होती है. एंड देन वी जस्ट स्ट्रेट वेंट टू एंड ओपनड टू टेक आउट द बाई साइड हियर. बाई साइड कैसे है, लेट मी शो यू, गो हेड एंड शो यू कि बाई साइड कैसे मैं बता रहा. सो यहाँ पे इक्वल हाइज़ हैं यहाँ पे थर्सडे को, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल हाइज़ हैं विच इज़ ऑल्सो ऑन थर्सडे, एंड वो फ्राइडे को प्राइस वहाँ पे नहीं आ पाया. इट वॉज ऑलमोस्ट देयर बट वॉज नॉट देयर. फिर जैसे ही ओपन होता है इट गैप्ड अप इनटू दैट बाई साइड इम्बैलेंस, sell side inefficiency as well as some buy side. And now I am looking at this hourly buy side imbalance, sell side inefficiency, which is this, and price have been holding here. एंड तुमको लग रहा होगा ये तो ग्रीन कैंडल है, तो मैं ऊपर क्यों न्यू वीक ओपनिंग गैप करके लिखा हुआ. सो उसके लिए तुमको जाना होगा इस कैंडल पे ही, और इस कैंडल पे ऊपर अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे ओपन देखना कहाँ पे है. सो ओपन इज़ ऑन 19,225. सो हम जब भी मार्क करते हैं प्रीवियस वीक ओपनिंग हाइज एंड लोज या गैप हाई एंड लो, तो लास्ट कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होता है आफ्टर अ ब्रेक, उसका ओपन वहाँ पे हम मार्क करते हैं. सो इसका ओपन ऊपर हुआ है, ठीक है, ना कि नीचे. सो भले ही ये ग्रीन कैंडल है, टेक्निकली यहाँ से होना चाहिए था, बट आई थिंक दिस इज़ अ ग्लिच फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू. सो
मैंने इसको ऊपर मार्क किया, राइट। एंड यहाँ पे बिकॉज नंबर्स डोंट लाई, इवन जो चार्ट पे दिख रहा है वो गलत हो सकता है। सो अभी फ़िलहाल प्राइस क्या कर रहा है? सो हियर्स एक बहुत छोटा सा इम्बैलेंस है 1 घंटे का। सो लेट मी गो अहेड एंड मार्क दैट एज वेल। So it's a very tiny one, but I'll for the sake of perfection, I'm going to mark that as well. So that's a 1 hour BC right there. And next hourly candle is important क्योंकि हम काफ़ी टाइम से एक रेंज में है, so हमारे लिए ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलने के लिए हो जाता है। So let's just get here and see what we have in play. सो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप और हमारा रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा बिफोर वी गेट स्टार्टेड। हमारा ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स का है। मैंने यहाँ पे टॉगल किया, तुम्हें तो पता ही होगा, यहाँ पे तुम टॉगल कर सकते हो। अभी तक तो पता चल गया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, देख सकते हो। आई नो कि मेरी लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी होगी है आई रियली एम enjoying the lightning in my room. Anyways, the voice quality is also crisp and I really love it. So हमारा यहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में गैप था, इसको भी मैं मॉनिटर कर रहा था, इस पर भी मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किया हुआ था, बट उसे मैं अभी फ़िलहाल हटा दिया क्योंकि हम ऑलरेडी ओपन हुए हैं गैप अप। सो दिस इज़ कंप्लीट वॉल्यूम गैप, इट्स सकिंग प्राइस इन। तो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप देखने की ज़रूरत है क्या हमें? अगर देखा जाए तो टेक्निकली नहीं, क्योंकि हम 400 हैंडल ऊपर आए हैं। सो यहाँ पे बन सकता है हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। वी कैन स्टिल वेट फॉर इट इफ़ यू वांट टू, बट इट रियली डजंट मैटर। सो हमारा बाय द टाइम 10 वी आर मोस्ट लाइकली टू गो इन टू दैट एरिया एटलीस्ट। यहाँ पे हमारे वैसे तो सेल साइड मतलब लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पे भी कुछ सेल साइड लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार मार्क भी कर लेता हूँ। सो इट्स ईजियर फॉर आवर आइज टू सी एंड कीप अ ट्रैक ऑफ इट। इसे मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, और मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे 5 मिनट का एक इम्बैलेंस भी है, सो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, और हमारा अभी तक फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बन गया है, यस बन गया। सो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये है, सो इसको हम मार्क कर लेते हैं एंड लॉक कर देते हैं सभी चीज़ों को। ऑलराइट, सो अब जल्दी से ES के साथ दोनों को पेयर करके देखते हैं, क्योंकि तभी तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, प्राइस के पीछे कहानी पता चलेगी। अदरवाइज यू आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड लॉस्ट इन वुड्स। यू डोंट हैव टू बी दैट, राइट। सो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम नोटिस करें, सो हम दोनों में ही यहाँ पे अपने जो ओपनिंग कैंडल थी उसके ऊपर गए हैं, राइट बिफोर द 9:30 ओपनिंग बेल। एंड what's interesting for me to watch and why I am saying कि अभी ज़्यादा volatility आ सकती है, क्योंकि price have been staying in a range since the morning, so this is pretty good opportunity for the price. And since we have opened so heavily on the buy side, I have not marked the opening in the regular trading hour, so let me just go ahead and do that first. So हमने यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक का हमारा था ओपनिंग रेंज गैप। सो दिस इज़ आवर ओपनिंग रेंज गैप। इसको थोड़ा सा सटल करूँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पॉपअप होता है मेरे विंडो पे, बहुत ज़्यादा सटल लग रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रिटी बेटर देन द प्रीवियस वन, सो आई एम गोइंग टू सेव दैट एज वेल, सेव एज ओपन रेंज गैप। ऑलराइट, oh I think I missed that open range gap, yes,
Okay, done. Now, what we have here, in a perfect world scenario, by the clock 10 AM प्राइस को नीचे होना चाहिए, राइट? कहाँ होना चाहिए? एटलीस्ट 50% ऑफ दैट. So by the 10 AM we should be there, and that can be a kind of model. That could have been your entry there. And straight to the 50% there and into the first. And I will just see if we get something to get inside this run, and if we don't, it's still okay, it's still fine. We have lots of opportunities coming this week, and a lot less volatility to be expected. To be honest, यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो 40 पे, इट्स नॉट बैड. और यहाँ पे लेते तो कहाँ ऐसे रखते? अगर मैं होता तो यहाँ रखता. So that 50 हैंडल का ऐसे. Now that could inverse that now. Inverse that. We have already been below this, and I expect a deep retracement, or either S&P 500 एक बार वो जो लास्ट 90 मिनट साइकिल का कैंडल है उसके नीचे चला जाए. अगर ऐसा होता है, दैट टेल्स मी दैट इट्स वे बेरिश, एंड फॉर नाउ, yes, I'm not saying long term perspective, just some scalpers objective here. And there we go. That's a good ass trade. सो अब अभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ है, एंड वी हैव 9:15 कमिंग. सो आई वांट अ डीप रिट्रेसमेंट इनटू दैट इन्वर्जन, एंड यहाँ से एक शॉट ले सकते हैं यहाँ कहीं एसएल रख के. सो कीप अप आई हियर एंड कीप वॉच what they are doing here, and be very active when looking at trades at this moment of time. 9:43 and body candles में it's about to close. So next candle, like by the time 1 minute and 30 seconds, we are supposed to go either downside or for the upside. If we are going for the upside, अगर हम ऊपर जाते हैं next 15 मिनट के opening candle पे, then that's where we can enter potentially and get inside this run, or else it's just mohawk and for us, because अगर तुमने enter नहीं किया. So it's pretty heavy right now. Yes, we reached our first objective, which was our London low. एंड एक SMT डाइवर्जेंस बनते हुए. सो अभी भी एक डीप रिट्रेसमेंट आ सकता है बिफोर अ रन टू द सेल साइड, सो वी कैन वॉच दैट एज वेल. आई वांट टू सी अ डीप रिट्रेसमेंट नाउ, क्योंकि एक SMT बना हुआ है, सो इट्स ऑब्वियस दैट इट शुड बी शोइंग मोर डीपर रिट्रेसमेंट्स हियर.
आई हैवेंट प्रेस्ड एनी बटन येट, एक भी ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़. The time is just not the time is not right yet for me to enter here. We can come up all the way up here into the 5-minute imbalance, and then we can again go for the sell side objectives. बस होपफुली एक और SMT ना बन जाए. एंड इट्स बेटर अगर एक बेरिश SMT अभी यहाँ बनता है तो. आवरली में क्या चल रहा है? आवरली में हम 50% ऑफ दैट इन्वर्जन पहुँच चुके हैं. आई थिंक दैट कैन बी द रीटेस्ट, बट आई थिंक वी शुड रिट्रेस हियर. इट्स लॉट ऑफ imbalance both in electronic trading hours as well as in regular trading hours. Yep, we are testing it. So एक 5 मिनट के imbalance में ऑलरेडी जा चुका और एक नहीं गया. What does that tells me? That tells me there's an SMT right there. बॉडीज नीचे क्लोज कर रही हैं, सो दैट्स अ साइन. $60. We can go one shot there. All right. Stop losses are set. But we technically we have reached almost this hourly inversion, so I'm not so pretty confident about the trade. But we have an imbalance, so I think it should be driving price lower. Let's see what technicals have to say, and we have almost 10 minutes, so price can still go up there. So ये कैंडल की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए.
I'm measuring that wick. पाँच मिनट का FVG and price can still drive lower. I want to see a retest of that if it's possible. Otherwise, the close here will determine ki how we travel from here. Agar we close bearishly below this like that, we can enter for shorts. All right. So let's see how it goes. Not bad. Certainly something what I expected as a rejection there. Stops above here looks good, like here. Closing of this candle is pretty important for me because we can revisit this area.
we are using this either as inversion or CB. But here, looking at the time, I want to see it act as CB more often. And I want to see price drop real hard. I'm still थिंकिंग कि प्राइस इसको कैसे यूज़ कर, और ये क्या चीज़ है यार, एक सेकेंड, व्हाट द फक इज दिस लाइन, व्हाट द फक इज इट, फक दिस लाइन, व्हाट इज इट अबाउट. So we have 3 minutes into the closing of this 15 minutes, and I want to see it go straight to the target. Yes, just like that. I want to see a closure for me to trail my stop losses. One more minute into the close, or else I'll close all of my trades if it doesn't start moving. But it should be moving, right? Let's go. Let's go. Let's fucking go.
Oh fuck. Any closure here? Any change in the order flow in the 1 minute? 5 मिनट का तो सही लग रहा था मेरे को देख के. 5 मिनट अभी भी सही है. Still good to go. So next 10 minutes are important for our target. I have multiple trades running right now, so let's see how it does. ये 5 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस विल टेल मी वेदर शुड आई बी आउट ऑफ द ट्रेड और स्टिल होल्ड इट. आई थिंक इसका मन है अभी ऊपर जाने में, सो आई एम आउट फ्रॉम ऑल ऑफ माई ट्रेड्स. And I will wait now before it goes anywhere else. Because we have a SMT divergence, so I think that's the reason for price to retrace that much. I'm not bullish today, so there is not something I'm watching for the upside yet.
I'm interested into nothing here, so that's why I'm silent right now. I'm just reading tape reading price. And if you really like the video, you can give me a thumbs up. So first presented fair value gap, is that it? क्या यहाँ से हमें rejection मिलेगा? Any reaction to this fair value gap will tell us whether we are bullish or we are bearish. If we are bullish, then how long it can go? It can go for the buy side here. We already have a SMT divergence, so nothing surprising here. That's a bullish reaction from that inversion. Now we are testing that these two consecutive candles, and maybe we can close above here if we are bullish, or else I want to see price drop below into this and use this as an inversion. So that's the deep retracement I have been expecting, not this. So as soon as we leave this, there is 70 handles of stops. You can, if you can afford, you must do it. So I don't want to see anything up here, so that's 50 handles.
In the 5 minute we are testing that candle, so next 5 minutes are really important. तो हम कहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, गुड डीड. If this candle fails to send it lower, if this imbalance fails to send it lower, we are about to close it. We should be closing it. As long as इसका बॉडी नीचे क्लोज हो रहा है, that tells me we are on the right side. This 30 seconds is pretty important. तो 15 मिनट का क्लोजिंग है. We are using this, I guess. So I wanna see it fail now. Again, exploring the ends using the buy side. BC body is closing lower. Oh yeah, that's what I wanted to see, to be honest. Okay. So अगर यहाँ तक स्टॉप है 49 का,
Hmm. What the fuck is this? क्या हो रहा है भाई? Okay. दो मिनट बाद पता चल जाएगा ये कैंडल किधर बनना चाहता है. Or are we in a just some kind of range? एक मिनट बाद I don't want to see anything above here. So मैं थोड़ा सा मूव करने का यहाँ पे इसको टाइम दूंगा, थोड़ा स्पेस दूंगा, एंड देन बाय द नेक्स्ट मिनट क्लोज. अगर वो मेरे हिसाब से नहीं होता, इसके 50% के ऊपर होता है, देन आई एम गोना प्रीटी श्योरली क्लोज वन ऑफ माई ट्रेड्स. कि 5 मिनट में देन इट डजंट लुक गुड. It doesn't look good. So अगर if we reject from here, SMT बना यार, इसके वजह से इतना डीप रिट्रेसमेंट आ रहा हुआ. हाँ, तो बुलिशली अगर इसको फेल होना है तो फिर इसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा. लाइक बुलिश SMT अगर जो बनी है उसको कंटिन्यू करना है, तो ये जो एक शॉर्ट का SMT है उसको फेल होना होगा. अदरवाइज वी आर स्टिल गुड. आई एम वॉचिंग दिस राइट नाउ, दिस गैप. ठीक है, 3 मिनट और इस कैंडल के क्लोज में वी विल होल्ड. It's the price action is so jagged right now.
इस कैंडल के 50% पे कैसे बिहेव कर रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड वी ऑल्सो हैव अ इन्वर्जन हियर. So that's sell side delivery, buy side delivery, sell side, buy side. 50% के आसपास क्लोज और इतना बड़ा प्राइस लाइक. Oh my. This is some real shitty price action you are watching, witnessing. But इस सभी प्राइस डिलीवरी में everything is algorithmic. Just because I'm not on the right side, or maybe you're not on the right side, it doesn't mean price is not doing it what it's meant to. It's what it's programmed for. That tells me we can still go for it. Go for it. ये 5 मिनट का क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. Not good. Fuck. This is some fuck ass price action. No idea what it has plans for. No idea. So this is the imbalance. I guess it have done a good job of balancing that out, and if we are testing that, then that's not pretty. That doesn't look good for me. That doesn't look good to me. I want to see a closure below that to determine anything from here. Like अगर हम bearish हैं, we should be closing below that. अगर bullish हैं, then we should be going and closing above here. I'm done for today's trading. That's the total loss I can occur. That's the total loss I can take in a trade. I can be wrong. So for now, I'm closing the trade. I'm closing the charts. I know कि better price action बाद में आ सकता है, but I'm not looking for it anymore. We have a SMT divergence here, but I'm not taking that. Fuck it. So 18,931, that's where my eyes is also. Same जगह पे मेरे भी eyes है bro, but it's not just providing me it, and my stops are not permitting me to enter it again.
anyways, this is not what I wanted to see. I think we can deliver on the second micro, and you could wait for the second micro, and that's where it can deliver, because for this 30 minutes it have been ranging. My days, see, look, market is so volatile, so much volatility, like 39 handles, 40 handles in just a single candle. That's, and with a bad price action. If it were a good price action, I would have been like printing. This is quite hard price action, to be honest. That's, if you see this kind of price action, you know that some high resistance liquidity run going on, and today we have Waller to speak. So I think it should be going there by the second micro, and I'm not participating because my my personal permitted loss limit is hit right now. So it can go anywhere now, and I would care less, because I know opportunity is there everywhere, and I'll get another chance even when I come back here tomorrow. So my days, my PNL is almost like last week I haven't traded, so I have managed to what I've managed to like secure the profits I already had made past few months. But this price action, looking at the charts, having so much of volatility going in market and not able to get what you wanted and see what you want to, it's pretty bad. It's pretty, and especially when you have been like trading for like so many years now, and you still get to see these kind of days, and that's what tells me that it takes a lot more than what I think. It makes me humble. Sometimes it can get over your head, and you need to be humbled. So these are the days, these are the conditions which tell you, yeah, not every day is a trading day, and you should be expecting volatility in the markets at very specific times and things like that. So that's it for today, guys. Thanks for watching it. And since we have this large price range, I wanted to get into that trade for the next silver bullet, but that's not how I wanted to see it. So I took another chance here, and I failed to do that. So this is not me failing, this is not my setup failing, this is not what ICT's concept is failing. It is just mere price action, and I'm sitting at the wrong time. Maybe I'm just looking at the wrong way, or maybe just it's the market which are not permitting it. It is the time which is holding the price right now. It's not the time yet, and they might have something cooking this week. So whenever I take loss, it never gets to me. It never gets to me in my head. I always come back, and I know that I can cover the complete losses I made in just two trades, like maybe one trade or two trades. Just I need that. That's all how many trades I need to cover all the losses I would have ever made. So technically speaking, you should be very careful trading at this time. You can get a setup around at 11:30 or at 11 EST. So you could go for that. Yup. Have a nice day, bro. Thanks for watching, and we'll see you tomorrow then. So bye bye. And if you really loved it, you can give a thumbs up, because
I think I'm the most honest guy who can come here and say, yeah, not every day you can get your setup, and I be very transparent about my uh, things. If I take a loss, I say it. If I take a win, I show it. And right now, I'm trading on a different platform, so I have to use my mobile phone to enter the trades. So yeah, thanks for watching, Mish Bol Haki, and we'll see you soon. Till then, be safe and manage your positions well, because market is too volatile and can rig